to the ground. Hi everyone and welcome back to my channel. I'm Anusha and thank you for joining me. So this is something new because you can see my backdrop and थोड़ा सा change हुई है मेरी इस room पे. So this is my new studio room. You can see. अगर आप लोगों को lighting में कुछ भी problem हो रही है, so please let me know in the comment section below. I will definitely change that out. So मैं आज आप लोगों को एक ग्लोई dewy skin types का एक foundation look दिखाऊंगी. Foundation not foundation look. It's a makeup look. So I hope this video will helpful for you. So stop talking and start doing. So let's get started. So at first मैंने स्क्रब कर चुकी हूँ मेरी फेस पे and उसके बाद मैंने टोनिंग भी कर चुकी हूँ and you can see my hair, it's my natural hair. थोड़ी सी वेवी है. So I just washed my hair. मैं इसको एयर ड्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ. So at first I have to tie up my hair. So this is the Parting Morning Nectar Moisturizer and इसके अंदर SPF 30+ भी है. So मॉर्निंग के लिए मुझे ये मॉइस्चराइजर पसंद है. बहुत ही लाइट वेट है, थोड़ी सी ऑयली टेक्सचर है. अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है एंड आप ज़्यादा ऑयली फिनिश पसंद नहीं करते हो तो आप इसके बदले में जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो. आपकी पसंद की कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो. इट्स टू थिक एंड बहुत ही लोशन बेस्ड है. सो आई लव थिक मॉइस्चराइजर. सो एट फर्स्ट मैं इसको रब कर लेती हूँ हैंड पे, देन मैं टैपिंग मशीन पे फेस पे अप्लाई करती हूँ. देन थोड़ी सी मसाज, थोड़ा सा मेरी नेक पे भी. नेक्स्ट मैं मेरी फेस पे प्राइम एंड फिक्सिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कीको मिलानो प्राइम एंड फिक्सिंग स्प्रे. दिस इज माय सेकंड बॉटल बिकॉज आई फ्रीकिंग लव दिस फेशियल मिस्ट गाइस. इट्स सो रिफ्रेशिंग. माय फेस को अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो लगती है. So next moving on to the foundation, and for the foundation today I'm not using any types of matte finish foundation. So today I'm gonna be using liquid formula. I love this foundation and this is the L'Oreal True Matte Super Blendable Foundation. And इस look के लिए मैं इस foundation को apply कर रही हूँ because इसके अंदर थोड़ी सी shimmery effect है. So which I love for this look. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है so you will not love this foundation. And this is not a full coverage foundation. It's a dewy finish foundation. You can see मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा एक glow दिख रहा है. I'm using Makeup Revolution Conceal and Define. I love this concealer because it's a very thick consistency. Now I am using a little tiny just setting powder just onto under my eye, just underneath my eyes. So I'm just using Maybelline Fit Me Loose Finish powder. I'm just taking a very little quantity and just applying onto my underneath my eyes. And then I'm just blending this. Okay, today I'm gonna be using the Freedom Contour and Highlighter and I'm taking this brown shade. And little bit onto my nose.
Okay, now I'm taking the Faces bronzing powder. I love this powder, guys. It so smells like so good, and I am just obsessed with this powder, guys. It looks my skin so dewy and shiny and glowy, so that's why I love this bronzer. For the blush, I'm using the Maybelline Master Flush Creator, and I love this shade. It's ombre shade and it's the oranges golden shade. I'm taking a little quantity, and so today I'm gonna be using at first a liquid highlighter, and this is the Maybelline Master Strawberry Cream, and I love this shade, guys. It's so natural finish. I'm just taking onto my hand just like this and applying this with my beauty blender. So you can see it's so glowy, so natural. For the light ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट लग रही है, थोड़ा सा ज़्यादा शाइन दे रही है, बट अगर आप नेचुरल धूप में निकलेंगे तो उस टाइम पे आपकी स्किन बहुत ही नेचुरल लुक लगेगी. And now for the powder highlighter, I'm using again my all-time favorite from the Freedom palette. I'm using this champagne rose gold shade. I love this highlighter, guys. I just love this highlighter. And मैं always highlighter के लिए मैं fluffy brush use करती हूँ. मैं fan brush use करना पसंद नहीं करती हूँ. And just applying the over the highlighting area. So guys, you can see my skin is looking so glowy and dewy, but I need a little bit more bronzer onto my skin. For that I'm using from the Freedom palette. I'm taking this shade, this darkish brown shade, and it's a little bit shimmery onto it. I'm just applying this. मैं बहुत क्विकली मैंने आईब्रो फिलअप करके लौट गई हूँ. So now moving on to the eyes, and for that I am not using any eyeshadow onto my eyes. I am taking my bronzer and my blush, and for that I am taking a notepad and taking a paper just like this. I'm taking my bronzer again, पेपर को इस तरह से लेके मेरी outer corner पे इसको मैं blend करूँगी and onto my face just like this. Now I am taking from the blush, I'm not taking this deep orange shade. मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो shade है उसको लेके मेरी इनर कॉर्नर से आईलिड तक इसको अप्लाई करूँगी. Now moving on to the mascara, I'm using my all-time favorite Maybelline Lash Enhancer mascara.
So मैं आज कुछ भी eyelash नहीं बनाऊंगी because I love the finishing of the lashes with mascara. आप लोग देख सकते हो मेरे eyelash को बहुत ज़्यादा thick कर दिया है. So that's why I love this mascara. Now moving on to the lip, and for the lip today I'm gonna be using first lip balm, and this is the Good Vibes lip balm and the flavor is coconut. I love this lip balm, guys. Now I'm using my Revlon lipstick. Now to set everything in place, I'm using again my Kiko Milano Refreshing Spray. So guys, this is the final look. I am totally loving this look, guys. I hope you enjoyed this video, guys, because you can see a natural dewy skin onto my face and I just love this look, guys. I hope आप लोगों को बहुत पसंद आए ये look, and especially the highlighter, guys. It's totally like, oh my god. So for the lip balm, it's melting my lipstick. That's why it's look like little bit glossy, which I personally love. But अगर आप लोगों के पास ये lip balm नहीं है तो आप lipstick के बाद एक ग्लॉसी लिप ग्लॉस पहन सकते हो, बट उसको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा और लाइक अ ग्लॉसी हाइलाइटर लिक्विडी लाइक थिंग. If you guys enjoyed this video, so as always, please subscribe to my channel and click the bell icon for instant notification and hit the like button. And guys, tell me which types of video you want onto my channel. I will definitely love to do that. So for now, I'll see you all in my next video. Bye.